morning, dear students. I hope you are all watching the videos which we are sending you on the YouTube link, and I have already sent the 2 videos previously. Today is the third part of the video of chapter number 3, that is In Search of Peace, Buddha and Mahavir. In first 2 videos I have sent you, we have seen the life of Mahavir Swami, Gautam Buddha. Where was he born? In which century BC? Who was his father? Who was his mother? Then we have seen why was he being married at a very early age? Because somewhere his father was worried that if Gautam Buddha would become a saint or a monk, then what would happen about his kingdom, that is Kapilavastu kingdom where he belonged to. So that's why his father thought of making him married early into the earlier life. इसीलिए उनके फादर ने सोचा कि अगर उसकी हम शादी अर्ली एज में करें तो शायद उनकी जो सोच है, the way he was thinking, वो चेंज हो सके. That's why he was being married at the earlier age, and he had a son named as Rahul. Then we have seen at what age did he left his home, and उनके फिर उन्होंने जो चीज हासिल करनी थी वो कैसे उन्होंने हासिल किया. So it says at the age of 30 he left his home along with his charioteer, Channa and horse. Then they went to the river side गए और उनका जो princely getup था, जो कपड़े उन्होंने पहने थे, the ornaments which he had, he took off everything and gave to Channa and ordered Channa to go back to his kingdom, to his state, and give everything back to his father. फिर उन्होंने एक जो गेटअप किया था वो साधु जिस हिसाब से जो कपड़े पहनते थे उसी टाइप के कपड़े पहन के वो जंगल में चले गए. Further we have also seen he met with 5 Brahmins, and that 5 Brahmins they were preaching, मतलब उनका जो मेडिटेशन करने का जो तरीका था वो it was like they were not having food, they was not having water, and in somewhere ये सब चीजें देखकर गौतम बुद्ध को ये लगा कि by doing all this thing we will be giving tormenting our body. हम कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को हम लोग कष्ट दे रहे हैं. So he left that 5 Brahmins, फिर वो जंगल में आगे और चले जाते हैं. Then he sat under the people tree, he started doing his sadhana, and after many years he attained the enlightenment, on the day of Vaisakh Purnima. फिर we have also seen the preachings में हमने देखा कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने क्या मैसेज दिए थे. So he made that 5 Brahmins again at a place called Sarnath. वहां पे पहली बार उनकी preachings उनको देते हैं, उनको बताते हैं, and that preaching is being termed as धर्म चक्र परिवर्तन. और उन्होंने बताया कि ये जो पूरी दुनिया है, the world is full of miseries, it is full of sorrow, discomfort. And it says these all things, discomfort हमें क्यों आता है? The reason behind of getting the discomfort is somewhere greediness, eager to have more of the things again and again. Somewhere we are not satisfied by our things. तो ये सब चीजें उन्होंने पहली बार 5 ब्राह्मण्स को बताया. Today we will be further moving और हम देखेंगे गौतम बुद्ध as a great reformer. उन्होंने क्या किया था? Why he is being called as a great reformer? तो क्यों? He worked for removing pollutants in religion and society. तो हमने पहले भी देखा है कि गौतम बुद्ध ने बहुत ही मेहनत की है सोसाइटी के लिए. क्यों उन्होंने घर छोड़ा? कहीं ना कहीं he felt somewhere कि he should work for the society. सोसाइटी में चेंजेस लाने चाहिए. It was into the 6th century BC. तो he thought of removing pollutants in religion and society. जो चीजें जो सोसाइटी में चल रही थी उसको और रिलीजियंस में भी चल रही थी उसको रिमूव करना था. We have seen जो शूद्रस थे, जो हमने 4 डिवाइड किए थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैष्णव एंड शूद्रस. तो शूद्रस वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू द टेंपल. उनको परमिशन ही नहीं थी. समवेयर उनको उस तरह ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो कोई बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था. तो गौतम बुद्ध समवेयर ही केम फॉरवर्ड और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है. ही वर्क फॉर द सोसाइटी में इवन ही did some good things for the society. He was working for he was giving encouragement for women in the society. He was telling that women should also be given the same importance as to the men. कहीं ना कहीं even he went against for the child marriage. He was propagating for the widow remarriage. Second, many kings and states were encouraged by him. आगे ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे, बहुत सारे ऐसे किंग्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो एनकरेज हुए थे. They were being encouraged by the preachings
by what Gautam Buddha wanted to give the message into the society. So many kings and states they accepted what message was Gautam Buddha was giving in the society. So this was as like उनको ये बताया गया कि why he was being a great reformer. Now he did following. उन्होंने सोसाइटी में क्या किया था? What did he did for the society and why he was being termed as a great reformer? The first point it says denial of God and soul. गौतम बुद्ध it says like सबसे पहले उन्होंने डिनाई किया था, he denied of God and soul. उसने उन्होंने ये कहा कि भाई if there was a God, then definitely people would not have been having any kind of sorrow in their life. Instead of that, he said like do the good deeds. उन्होंने ये कहा कि कर्माइज्म मतलब कर्मा, आप अच्छे कर्म करोगे, definitely it will come back to you. If you do good things, if you do good deeds, definitely it will come back to you. अगर भगवान होते, if there would have been the existence of God, then definitely there would be no sorrow. So first point he said like he denied of God and sorrow. Oppositions to rituals. उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला? Oppositions to rituals. Opposition मतलब he went against of rituals. अब rituals किस हिसाब से? Rituals in the terms of पहले जो into the ancient time हमने देखा कि पहले के जमाने में कोई यज्ञ करते थे, हवन वगैरह, तो जो बफेलो का जो छोटा बछड़ा हम बोलते हैं उसको काट के वो लोग उनको अर्पित करते थे यज्ञ में. So Gautam Buddha as a man he saw, he did not like that. उन्होंने सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? Why they are doing? So he went against that. उन्होंने इस टाइप के sacrifices के against काम किया, उनके against बोला. Along with that Gautam Buddha ने ये भी कहा है कि be so humanity. अपने आप को like you have to be human. You have to be kind to animals. आप animals को like be kind to animals instead of doing any kind of violence thing. Violence in terms of killing the animals in yagnas या फिर इस तरह की चीजें करने से गौतम बुद्ध he always went against कि ये सब चीजें आप stop करिए. Third point, opposition of discrimination of high and low. Third point क्या कह रहा है कि opposition of discrimination. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? मतलब जो हम डिवीजन करते हैं हाई लो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जस्ट टोल्ड यू रिसेंटली दैट ही ऑलवेज वेंट अगेंस्ट द कास्ट, मतलब हायर कास्ट, लोअर कास्ट. अर्लियर देयर वर फोर मेन थिंग्स ना, ब्राह्मण्स, then they had Kshatriya, then they had Vaishnav and Shudra. So he always went against that. Instead of that, उन्होंने बोला कि अगर if anyone would have been born into the as a king, तो इसका मतलब ये नहीं है he's a great person. A person becomes great by doing good things. उनका कहने का ये था कि अगर आप कोई किंगडम में बॉर्न होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए, but if you do good things then definitely you will become great. So he said that there is nothing like high caste low caste. Instead of that उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करिए, okay, then definitely by your work you will become great. Importance of women. The main thing Gautam Buddha said about importance of women, he gave equality to women. He said as and when if men can get nirvana, why not women also can get nirvana by sadhana and knowledge? So he also gave the importance to women. So this is all about the reforms which he wanted to bring in the society. First, denial of God and soul. Second, oppositions to rituals. Third is opposition of discrimination of high and low. And the last is importance of women. Last now we will see about the nirvana. It says Gautam Buddha attained enlightenment in the shadow of Bodhi tree on Vaisakh Purnima. We have seen that after many years of his sadhana, okay, he got his enlightenment in the shadow of Bodhi tree on Vaisakh Purnima. Further, giving preachings of truth and non-violence. वो हमेशा उनकी जो प्रीचिंग्स थी, मैसेज क्या देते थे कि आप सच्चाई का साथ दें, ऑलवेज से ट्रूथ. अगर आप किसी चीज के लिए आप झूठ बोलोगे तो वो आपको बचाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट ऑलवेज से ट्रूथ, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाटएवर द रिजल्ट इज, हमेशा फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मतलब हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, हमें किसी को वी डू नॉट हैव टू कट एनी बडी for the sake of yagnas and all. So he always wanted to give a message that you should always move on the path of truth and non-violence. Further, he said that opposite of non-vegetation food. उन्होंने ये भी कहा है कि आप non-vegetation food नहीं खाना चाहिए. Always go for vegetations, food and other things. High and low discrimination. जैसे आपने आगे देखा कि उन्होंने ये always
वर्क फॉर हाई कास्ट एंड द लो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिवीजन है उसका अपोज इन्होंने किया है। He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana. Further it says गौतम बुद्ध का डेथ कब हुआ था? So गौतम बुद्ध he died at the age of 80 years. उनकी एज थी 80 years और कहां पे एक्सपायर हुए, कहां पे उनकी मौत हुई थी? कुशिनारा एंड attained nirvana. So this is all about गौतम बुद्ध. Now we will be studying about Mahavir Swami. Okay, in that it is said Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism. तो जिस तरह बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस थी जैनिज्म सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, ठीक उसी तरह जैनिज्म की भी इंपॉर्टेंस थी। जैनिज्म आल्सो लाइक अटेन्ड गॉट इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म। देयर आर 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म। सो हाउ मेनी आर देयर? 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म। द फर्स्ट तीर्थंकरा वाज ऋषभदेव और आदिनाथ। तो ऐसा कहा जाता है लाइक अकॉर्डिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग इट इज सेड लाइक जो फर्स्ट तीर्थंकरा हुए थे लाइक इट वाज ऋषभदेव और आदिनाथ। फर्दर जो 23rd तीर्थंकरा थे ही वाज पार्श्वनाथ। जो 23rd मतलब महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकरा बने ही वाज पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ आल्सो इट इज लाइक जैसे गौतम बुद्ध ने 30 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ा था, ठीक उसी तरह पार्श्वनाथ जी ने भी अपना घर एट द एज ऑफ 30 इयर्स उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। पार्श्वनाथ जी भी एक प्रिंस थे। That's why it says he was son of King Ashwasen of Kashi. His kingdom like वो काशी को बिलोंग करते थे और उनके फादर जो थे वो किंग थे, उनका नाम था अश्वासेन। He left home at the age of 30 years, became hermit and preached Jainism. उन्होंने अपना घर कितने साल फेंक दिए थे जब उन्होंने छोड़ा? At the age of 30. उन्होंने जैनिज्म के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दी। He preached Jainism like what Gautam Buddha was doing for Buddhism. महावीर स्वामी was 24 तीर्थंकरा। उनके बाद जो लास्ट तीर्थंकरा हुए थे इट वाज महावीर स्वामी। इन 20 लाइक जो इससे लाइक जो ऋषभदेव थे उन्होंने भी वही चीज सोसाइटी में मैसेज दे रहे थे अबाउट यू नो सेइंग एक्सेप्टिंग अबाउट द ट्रूथ, यू हैव टू से द ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, देयर शुड बी नो रिचुअल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। सो फर्दर ऑन आई विल बी टिल हियर I'll be ending of the video. Please look the video, refer the textbook. If you have any of the doubts, we'll be solving out into the live session. I'll be sending the PDF relating to the video. Till then, everyone, please take care of yourself and be safe. Thank you.